आज तो नोबिता लेट हो गया। अरे वो आ गया। डोरेमोन 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 डोरेमोन। अरे आखिर बात क्या है नोबिता? डोरेमोन, मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत बच्चा हूँ। लेकिन बताओगे आखिर हुआ क्या? मैं क्या करूँ, जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। पर कैसे? आज जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था उसी वक्त मुझे राइट सड़क लेनी थी क्योंकि वो छोटा रास्ता है, पर वहाँ एक डॉगी भौंकता है, इसलिए मैंने लेफ्ट सड़क ले ली। वो लंबा रास्ता है पर सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तब कोई मुझे बचाओ! वहाँ पहले से भी बड़ा डॉगी था। अच्छा, तो इसी वजह से आज तुम लेट हो गए। सिर्फ इतनी बात नहीं है डोरेमोन, आज स्कूल में भी ये आखिरी चांस है। क्या तुम दोनों तैयार हो? स्टोन पेपर सीजर। ये मैं जीत गया। ठीक है नोबिता, पहले तुम चुनो। मुझे चुनने दो। नोबिता सुनो, उनमें से एक ये वो है जो मैंने उठाया है। क्या सच में? आखिर शिजुका ने कौन सा उठाया होगा? ये वाला। मुबारक हो मेरे दोस्त नोबिता, तुमने एक कैसेट टेप जीता है टाकिशी गोडाज 100 बेस्ट हिट्स का। नहीं। ये तो सच में बुरा हुआ नोबिता। डोरेमोन, मुझे पहले ही पता होता कि शिजुका का कौन सा है तो फिर मैं ऐसे कभी नहीं चुनता। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जियान का बेसुरा गाना तो कोई भी नहीं सुनना चाहता। तो फिर ठीक है डोरेमोन, तुम मुझे कोई ऐसा गैजेट दे दो जिससे मैं सही फैसला कर सकूं। मेरी बात समझ गई ना? नोबिता, तुम फिर से मेरे गैजेट्स पर निर्भर हो रहे हो और ये बहुत गलत बात है। ऐसे तो तुम कभी अपना काम खुद नहीं कर पाओगे। प्लीज ऐसा मत करो डोरेमोन। जियान ने कहा है कि गाने सुनो और मुझे कल तक बताओ कि वो कैसे थे। अब मैं क्या करूं? अच्छा भी ठीक है। लाइफ लिटमस पेपर। ये क्या? ये तो सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है। अरे नहीं, वही लिटमस पेपर जो तुम्हारी साइंस की क्लास में यूज होता है, ये पता लगाने के लिए कि कुछ एसिडिक है या अल्कलीन इस पेपर के लाल या नीला होने से। तो अब तुम समझ गए नोबिता। अच्छा, अगर ये पेपर तुम्हारे मुंह में नीला हो जाता है तो ठीक है, अगर ये लाल हो जाता है तो गलत बात है। चलो अब हम ट्राई करके देखते हैं। हाँ? इन दोनों में से एक जीता हुआ है, तो तुम कौन सा पसंद करना चाहोगे? राइट। नहीं, लेफ्ट वाला। नहीं, मैं राइट ही लूंगा। हाँ, ये वाला ठीक है। अगर मैंने ये वाला खोला होता तो फिर क्या होता डोरेमोन? हाँ! ये सब क्या है? अब मैं इससे एक और बात पता करके दिखाता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, क्या जियान को बताना चाहिए कि उसके गाने बढ़िया थे? हाँ, ये लाल हो गया। ठीक है, एक बार और। क्या उसे बताना चाहिए कि गाने बेकार थे? देखो, इस बार ये नीला हो गया है डोरेमोन। हाँ, तो तुमने देखा नोबिता, तुम्हें जियान को बता देना चाहिए कि उसके गाने बहुत बेकार थे, है ना? क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल। तो तुम्हारे पास जितने भी हैं मुझे दे दो, बाद में बताओ। अरे नोबिता, जरा सुनो तो। अब क्योंकि ये मेरे पास है इसलिए मुझे कभी कुछ नहीं होगा। अरे ये क्या? अब मैं किस तरफ जाऊँ, राइट वाली सड़क पर या लेफ्ट वाली? ओह, राइट वाली सड़क पर जाता हूँ। हाँ, ये लाल हो गया, इसलिए मुझे लेफ्ट जाना चाहिए। नोबिता तो लेफ्ट साइड गया है, तो राइट साइड क्या है? हाँ सर, आप सुनिए, तुम यहाँ वहाँ घूमकर टाइम पास कर रहे हो। तुम्हें कल के टेस्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए। जाओ घर जाकर तैयारी करो। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब नोबिता कहाँ होगा? हे नोबिता, क्या तुमने मेरे गाने सुने? हाँ बिल्कुल। तो क्या सोचते हो तुम? हाँ, वो बहुत उदास थे। हाँ, क्या कहा तुमने? सच में नोबिता, तुम मेरे गानों की उदासी समझ गए मेरे दोस्त। शुक्रिया जियान। लगता है ये काम कर गया। हाँ 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 हाँ। अरे शिजुका, अब इससे मैं कल के टेस्ट के आंसर्स जान लूंगा और बिना पढ़ाई किए मुझे पूरे नंबर्स मिलेंगे। चलो सोया जाए। गुड नाइट डोरेमोन। ये लाइफ लिटमस पेपर पर हर चीज के लिए भरोसा कर रहा है और ये नोबिता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
एवरीथिंग ऑपोजिट। ये जो भी छूता है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अगर ये लाइफ लिटमस पेपर को छुएगा तो वो रेड हो जाएगा और सही चॉइस को दर्शाएगा। अरे ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। प्लीज मुझे माफ करना नोबिता। ये सही है। मैं सोच रहा हूँ कि नोबिता ठीक तो है। अब नेक्स्ट। हाँ। जियान ने कर दिखाया। नोबिता तो 3 स्टेप्स भी पार नहीं कर पाएगा। ऐसी बात नहीं है, मैं एक ही बार में 6 स्टेप्स पार कर सकता हूँ। क्या? क्या सच में नोबिता? हाँ, 1 मिनट रुको जियान। अरे मैं तो डर गया तुमसे। भाग कर मत जाओ। ओह, क्या मैं एक साथ 6 स्टेप्स पार कर सकता हूँ? अरे वाह, ये नीला हो गया। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ जियान। तुमने क्या कहा? अरे नोबिता, ये क्या कह रहे हो? तुम मेरी चिंता मत करो शिजुका। अरे नोबिता, उस पेपर के रंग अब बिल्कुल उल्टे हैं। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास टाइम नहीं है। ये बहुत ऊंचा है, पर फिर भी मैं पार कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? हाँ? ये कम आ सकता है। मुझे वापस करो। नहीं। अगर ये नीला हो जाए तो सब ठीक है जियान। हाँ। क्या मैं 8 स्टैक्स उठा सकता हूँ? हाँ, देखो ये नीला हो गया। टीचर, मैं 8 स्टैक्स उठाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है जियान? हाँ, अगर मैं ना कर सका तो जो सजा आप देंगे मुझे मंजूर होगी। अगर जियान ने ऐसा कर लिया तो फिर नोबिता भी ऐसा करेगा। हाँ? क्या कहा तुमने? लेकिन मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया। हाँ? हाँ? डोरेमोन। अच्छा, एक बात बताऊं? हाँ? क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने इसे पहले ही समझाया था। जियान, क्या तुम ठीक हो? बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन अब मेरे टेस्ट पेपर का क्या होगा? मुझे माफ कर दो प्लीज। वो 0 हो गए। कितना बुरा हुआ जियान, डोरेमोन। उठ जाओ, अब मैं तुम क्या ठीक तो हो करूँगा मेरे दोस्त? डोरेमोन? ये तो तुमने मेरी बात ठीक का नहीं कोई किया, जवाब ही नहीं बताओ दे मैं रहा क्या है। करूँगा? सर देखिए ना, जियान को उठाइए प्लीज। जियान। They used to say in the old kingdom of Alenga that light was everything. People prayed to the sunrise, celebrated the noon, and cursed the night. They believed darkness was where misfortune slept, and anyone who spent too long in it would wake at hunger. In that same kingdom lived a girl named Amira. She was small and quiet, with deep brown eyes that always seemed to be looking at something no one else could see. Her mother said she was born during an eclipse, half light, half shadow. Maybe that was why she was different. When Amira was 6, she discovered something no one else knew. The shadows could talk. It happened one evening when she was playing near the old well. The sun was setting, and her shadow stretched across the stones like a second self. Then it whispered, "Why do you play alone?" She jumped back, trembling. "Who said that?" "Me," said the shadow. "You always look, but you never listen." Amira was too young to be afraid for long. She crouched down and whispered back, "You can really talk?" "Yes," the shadow said, "but only when you stop pretending you can't hear." From that day, she talked to her shadow often. It was never cruel, never kind, just honest. It told her truths no one dared to speak. When her father left the city and never returned, her mother said, "He'll come back soon." But her shadow whispered, "He has already chosen another home." When she told her mother what she heard, her mother slapped her gently. "Do not say such things. Shadows are liars." But Amira kept listening. Years passed and the kingdom changed. Crops began to fail, wells dried up, and people said the darkness was spreading. The priest commanded everyone to burn candles in every corner of their homes to chase the shadows away. Amira's house glowed like a lantern, but still her shadow stayed close. One night, as she sat awake, the shadow spoke again. "They fear what they do not understand." Amira sighed.
They say the shadows are cursed. The shadow replied, they curse what reminds them of truth. That night she dreamed of a place where light and darkness touched without fighting. She woke with a strange certainty. She had to find it. The next morning, she packed food, water, and a small mirror. Her mother begged her not to go. The forest beyond the hills is full of things that walk without light. Amira said quietly, then I will walk with mine. She journeyed for days. At night, she let the moon guide her steps. The shadow walked beside her, darker, bolder, alive. On the third day, she reached the forest her mother had warned her about. The trees were tall and thick, their leaves swallowing the sun. It was so dark that even her breath seemed heavy. Are you here? She whispered. I never leave, said the shadow. But you must be careful. This is where forgotten truths sleep. As she walked deeper, she began to hear whispers, not from her shadow this time, but from other shadows all around. Some wept, some laughed, some pleaded. At last, she reached a clearing where a pool of still water reflected no light. Its surface was pure black, like polished stone. This is it, her shadow said, the place where light meets its reflection. Amira knelt beside the pool. What must I do? The air trembled. A figure rose from the pool, tall, draped in darkness, eyes glowing faintly gold. It looked like her, but older. The figure spoke. You came seeking balance. But balance is not given, it is seen. Amira frowned. I don't understand. The figure reached out a hand. Look closer. Amira leaned over the pool. This time she saw her reflection clearly, half her face lit by soft sunlight filtering through the trees, the other half swallowed by darkness. She realized it was beautiful. Not good, not evil, just whole. The shadow spoke again, but softer now. Do you see? You are both the fear and the courage, both the silence and the voice. To deny one is to cripple the other. She nodded slowly. Then why does the world fear you? Because truth has no side, said the figure, and people love sides. When Amira touched the surface of the water, the reflection dissolved and the pool shimmered like dawn. The forest filled with light and shadow dancing together, not fighting, not hiding. She turned to thank the figure, but it was gone. Only her shadow remained, calm and silent beside her feet. She walked back home with a strange peace in her heart. But when she reached her village, she found it in chaos. The crops had turned white, burned by too much light. The wells were dry. People were angry, desperate. The priest shouted that more candles must be lit, more light, more purity. Amira stood in the village square and shouted, Stop! You are burning your own home. The chief turned toward her, frowning. What do you know, child? I have walked through darkness, she said, and I learned it is not our enemy. It is what gives a light its shape. Without it, even the sun blinds. The people murmured in confusion. The priest shouted, Blasphemy! But Amira did not flinch. You fear what you cannot control. Yet the truth does not belong to light or dark. It belongs to both. Suddenly, clouds covered the sun. The light dimmed. Panic spread. But Amira simply stood still, raising her hands. Look, she said, the world is breathing again. As the light softened, the air cooled, and the soil began to moisten. The villagers gasped as water trickled from the cracks in the earth. The wells began to fill. One old woman whispered, The shadows have returned our rain. The priest fell silent. The chief bowed his head. Were you, girl? Amira smiled faintly, a child who listened. From that day, the kingdom stopped fearing the night. People began leaving one corner of their houses dark, calling it the room of truth. Children played in the twilight without fear. Farmers worked by the rhythm of both sun and moon. Amira became known as the keeper of balance. When asked how she brought peace, she always said, by letting the world be what it already was. Years later, when she grew old, people came from distant lands to seek her wisdom. She never built a temple or wrote a book. She just sat under the shade of a mango tree, telling stories about the day she spoke to her shadow. And every evening, as the sun set, her shadow stretched long beside her, patient, calm, and proud.
Sometimes it moved slightly before she did, as if reminding her that darkness, too, could lead the way. When she finally passed, the villagers found her sitting upright beneath that same tree, eyes closed, a faint smile on her lips. At sunset, her shadow remained on the ground for hours after the light was gone, as if refusing to leave. And that night, the moon shone brighter than ever before. They say if you walk through Lenga now, you'll see no lamps burning in fear, only soft lights beside deep shadows, both alive, both sacred. Because one girl once listened to what everyone else tried to silence. Moral of the story: peace is not found in light alone. It's born where light and shadow learn to hold hands.